Hello friends, welcome to another interesting episode of my channel here, and this video is a continuation of my previous video where I shared the review of the inkjet printer, Epson ink tank printer, single function L130. So this video is basically for how to tricks for how to minimize color usage, how to have balanced color usage. All the inks are used balancedly, and it's not that I have a lot of yellow color, I have my black color finishing very fast, I am not able to use blue color, but my red color is finishing very fast. How to bypass these kinds of problems, what are the tricks? And I don't think anybody has ever discussed these kind of things before, so this is only the first time in this channel I'm going to share with you this kind of tricks here as a printer user itself myself. So the first part of this video is in English. इस वीडियो का सेकंड पार्ट हिंदी में है, हिंदी के हमारे दर्शक बने रहिए. So as you can already see, like we have a few like I have from my print portfolio that I have a lot of printouts. I have selected few, and as you can see here, you can notice something. Can you notice it, what I am trying to say here? You can say that like these are unusually colored, these prints are okay, and I don't think this is the way you are going to find it in Facebook and internet when you are doing it, searching these kind of images. For example, take this car here. It is a reddish tint to it. Now take this image here. It has a very high yellow percentage here, yellow and reddish kind of thing. Can you imagine this was the original image like this, was it? This one again, here you can see it's kind of shows. Okay, so this trick is basically your I have used like some of the less frequently used colors in my printer. I am able to use these things. Now how to do that in a fast way, like you don't need to edit images to do these things, you don't need to learn Photoshop to do these things. How can you do that, do this thing while printing the images only? Okay, so that's it already. So I've told you there is before getting into that hack, first one basic trick I'm going to say you, and it has got nothing to do with these colors here. The first thing is that you have to use good quality paper first of all. This is for your to minimize the ink usage. Okay, now ink usage depends upon your quality of the paper. Okay, if you use a very low quality paper, it is going to eat a lot of ink, and as you move up, and the highest thing is like here the photo paper, high gloss photo paper from Kodak, this thing if you are using, it is going to use less ink. Okay, and but if you have ever been to shops, they usually charge more for photographs than for document full prints. Okay, if you print this car in a document, then it's going to soak up more ink. I mean, this is what the general consensus is, and so you should always try to use good quality paper for your printer if you want more prints out of it. And so keeping that thing aside, so now let's move to how do we have these kind of. So this is basically because this is a black kind of image. Actually originally it was a black kind of image, but if I'm going to print it just like that, can you imagine how much black ink it will eat up? Similarly this one clearly you can see this is a black kind of image. Okay, but I have given it a red tint so that black is going to be used, but now some of the black has been replaced by red color. Okay, red, cyan is this purple kind of color. Cyan, red, yellow, these are the least frequently used colors in a printer. Black is the most highly used color. Black will drain fast. Okay, if you don't know, then also you can check my previous video also.
where I discussed this thing. And here you can see, like, here I am targeting the yellow color. Okay, so how do you target the color? Which color? Like, I want to use yellow color on this image more. I don't want to waste black color. I want to target yellow color. How do I do that? So I'll show you two examples, one document, one image. Okay, so anytime you want to print certain images, okay, most of the time you shouldn't directly go to the print instead, because you have seen, like, you want to make them in a, like, you want to fit them in a document. So the most thing useful thing is, like, you may use Word to do it, MS Word, to section the images, position it in a page, how resize the images. But what you should do is always convert these things to a PDF and then try to print it. Okay, documents are anyways mostly PDF documents are there, but pictures also I recommend you to do that in this trick, so that you have the PDF document. Then I'll show you the tool that I use for these kind of things, and it works with PDF documents, that's why. So here we have, like, this is the PDF Exchange viewer, and I'll try to provide a review link of this thing, but you can Google it, download it. This is a very nice utility for PDF. If you are all used through Adobe Acrobat Reader, Reader DC, those kind of software, you should check out this PDF Exchange viewer. So in this version of PDF Exchange viewer, I have, like, I can do these kind of, like, shapes and everything. I can do it. Okay, now first thing is I'm going to show you is how to change the document. Like, this is a black and white document. I now suppose that I need to read this thing. Black doesn't matter. Okay, it could have been blue, it could have been pink. I just need to read the document. In that case, how you can minimize the overuses of the black ink is that you take this rectangle tool here. Okay, now I'm going to show you. This is a rectangle here. The fill color, you can change it from here. Okay, let's suppose I choose blue. This part of it is actually experimentation basically, but you will get it right if you do it few times. Then you can see, like, it is completely overlapping the text. Okay, I cannot see the text because this is the normal color mode. Color mode, you have to change it from here. This is the blend mode. Okay, now if you select the blend mode, I'll show you, just a second. In the blend mode, there are a lot of options here. I don't think it's fitting the window here. Just a second. I want to show you all the options basically. So here you can see. Now if I click blend modes, now you can at least see it, or even now also you can't see it. Okay, so here you can see, like, there is multiply, screen, overlay, darken. You have to check, like, these last kind of things, difference and exclusions. You have to select it. I had not selected the image here. Okay, difference, now you can see. Okay, this still doesn't work because it is blue, black and yellow. Previously it was white, so this is not working. Okay, exclusion, soft light, color burn. Here you can see something interesting here. If I am using color burn, I get a blue color. Previously what was black, now you can see that it is navy blue. So if I change the color here to some yellow kind of thing, then you can see that we are getting near to something. Okay, you can still try. See this thing, this lighten filter, what I am used blend mode, it is actually able to do it. If I am able to select a cyan color here, see,
this is a pink kind of color. Okay, more colors you can select, and obviously you can, this is a kind of cyan kind of color. Cyan, if you want to see, this kind of color is no, this is pink actually, this is not cyan. Okay, cyan is this blue color. So if I select a little darker tint of it, cyan, see this. Okay, you can of course adjust to whatever level you are comfortable with. It is still better than all black, that's what I want to say. So now you extend this rectangle to the whole page, you copy this thing, paste in all your documents, and once you start to print this document here, you will see that this is you have targeted this blue color. So you are not wasting your black color, you are instead using your more of your blue color also. Some black will be definitely used, but now you are able to target the color. So in this way you can, like, if you have like I have lot of yellow color in my printer, then you are going to use these kind of things. Okay, and of course you can adjust the color darkness to whatever level is suitable for you. Then you have a, now this is targeting the yellow color. So this is basically the hack. You have to use it for text. Now I can also show you for image. Here image I have converted it, like this is a full page image only, but you don't need to do a full page image. You can always have 4 images in a page. Okay, but this here, now this is the most the best use case of this problem. So you have a picture, most of the pictures you will find that they will be having a dark background. So how are you going to print this? You don't need Photoshop to do this thing, right? But this thing, blend modes are available in Photoshop. If any of you are Photoshop users, you must be knowing it. So someone who is not knowing this trick, they're going to just print it and they're just going to waste a lot of black ink with this. How to do this thing is, like, if I select blue, okay, and like this, okay, the blend mode I have actually selected it, this difference mode I have previous to showing you. So this difference mode, if I have selected it, now if I extend this thing to the whole page, okay, now you can see if I print it, my blue ink is going to be used, black ink is not going to be wasted away. Okay, so it's better to have this blue, and of course further you can lighten this thing. Like if you want white kind of light coming instead of this blue, you don't want to even waste blue, then you can use some other filter on top of this. You are not restricted to only one rectangle. You can draw a second rectangle and you try to cancel this color. So it's basically playing with the color. Okay, addition and subtraction of colors. So if you get this thing right here, you have to check, like lighten, sometimes darken, sometimes overlay, sometimes soft light. If you get the thing right, then you can go ahead and print it. Okay, so instead of directly raw like images all the time, if you are printing, you are going to use up your black. And if you are not using the other colors, there is a different problem. If you don't know it, you can check my previous video, because the clogging of the other color will happen. Okay, so you have to ensure, so this becomes mandatory thing when you are possessing a printer. You need to know these kind of tricks to ensure that all your pipes, tubes carrying the colors, the heads are functioning properly. So this is basically the crux of the matter here. So I have given you 2 little tricks. One was the color quality, the paper quality basically. The second was this targeting of the color. So if you found this useful in any way, do share this with your friends, people who you care, and leave me a thumbs up or a comment, and consider subscribing my channel. So thank you. तो दोस्तों, आपका इस वीडियो का सेकंड पार्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आप ये जो देख रहे हैं डॉक्यूमेंट्स, ये जो प्रिंट्स मैंने लिए हुए हैं, ये कुछ मैंने सैम्पल्स लिए हुए हैं। मेरे जो पोर्टफोलियो, मेरा जो कलेक्शन है पिक्चर्स का, उसे यहाँ इसमें से आप कुछ नोटिस कर सकते हैं कि ये जैसे थोड़े से आर्टिफिशियली कलर्ड हैं। ठीक है, आप जैसे इंटरनेट में, फेसबुक में, व्हाट्सएप में जो पाते हैं शेड,
उसमें ऐसे कलर तो होते नहीं है, ये जैसे ये कार का कलर ये मोस्टली ब्लैक होना चाहिए, यहाँ पे ये रेडिश कलर है। और ये वाला आप देखिए, ये आँख वाला जो फ़ोटो है ये मोस्टली ब्लैक होना चाहिए, ये पिंक कलर का आ रहा है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे ये वाला जो है फेस का, इसमें थोड़ा सा बहुत ही ज़्यादा येलो और रेडिश कलर का है, ये तो नेचुरल नहीं लग रहा है बिल्कुल। ये ये एक्चुअली एक ट्रिक है, आप कैसे मतलब टारगेट कर सकते हैं। आपको ऑलरेडी पता चल रहा होगा कि मैं कैसे टारगेट कर रहा हूँ एक एक कलर को। यहाँ पे ब्लैक होना चाहिए लेकिन मैं उसको रेड टारगेट कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा ब्लैक कम यूज़ होगा, रेड कलर यूज़ होगा ज़्यादा, मतलब कुछ परसेंटेज रेड का आ जाएगा, यहाँ पे कुछ परसेंटेज पिंक का आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ परसेंटेज जैसे येलो का आ जाएगा, येलो कलर को मैं यूज़ करना चाहता हूँ। तो मैं इसको कैसे आप कर सकते हैं, इसके लिए आपको जैसे सोफिस्टिकेटेड फ़ोटोशॉप इमेज एडिटिंग की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। मैं आपको दिखाता हूँ कि जैसे रेगुलर वर्क फ्लो होता है प्रिंट का, उसमें कैसे आप इसको अचीव कर सकते हैं। उससे पहले एक छोटा सा ट्रिक जो कि मैंने, और ये सब आपको पता है कि ये सेकंड पार्ट है उस वीडियो का, जैसे एप्सन का L130 इंक जेट प्रिंट को मैंने रिव्यू किया हुआ था और कंपेयर किया हुआ था लेज़र के साथ। तो उसको आपने अगर चेक नहीं किया है तो आप उसको चेक कीजिए, क्योंकि उसमें जो प्रॉब्लम है उसका सल्यूशन यहाँ पे है, तो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो ये जो है, जैसे आपका पहले जो है आपको हमेशा ध्यान देना है आपके पेपर क्वालिटी पे। आप जैसे फ़ोटो प्रिंट कर रहे हैं तो अगर आपका क्वालिटी पेपर का क्वालिटी अच्छा है तो वो कम इंक यूज़ करेगा। अगर आप जैसे फुल, ये एक मैंने फ़ोटो ये लिया हुआ है, ये अगर मैंने नॉर्मल पेपर में लिया होता तो ये बहुत ज़्यादा सोक कर लेता, बहुत ज़्यादा इंक, जबकि उसको ग्लॉस पेपर में उसको उतना ज़्यादा इंक का ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो ये एक छोटा सा बात है, इसको ख्याल रखिए आप। तो जब क्वालिटी सिलेक्ट करते हैं पेपर का, तो आइए हम अपने जो मेन उसमें मेन ट्रिक पे आ जाए। तो ये आप कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ उसका डेमो, एक डॉक्यूमेंट को और एक इमेज के साथ मैं आपको उसका डेमो दिखाता हूँ। तो दोस्तों जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, जैसे कुछ इमेजेस हैं, जब आप प्रिंट करते हैं आपको डायरेक्टली प्रिंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप जैसे एक A4 साइज़ पेपर है उसमें आप डालेंगे तो पहले आप तो वर्ड में उसको लेते हैं, फिर उसको टाइल करते हैं, एक इमेज के अंदर एडजस्ट करते हैं, फिर वर्ड से आप प्रिंट दबा देते हैं। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि अक्सर हमेशा आपको PDF से प्रिंट करना चाहिए। अगर आप वर्ड में कर भी रहे हैं, एडजस्ट कर रहे हैं, या फिर इसको ही PDF बना के आप एक ही इमेज को फुल पेज उसको आप प्रिंट कर रहे हैं, तो बेटर है कि आप PDF में कर दीजिए उसको, PDF को फिर प्रिंट कीजिए। अगर आपका वर्ड डॉक्यूमेंट है तो वर्ड को PDF में कन्वर्ट कर दीजिए, फिर उसको प्रिंट कीजिए, क्योंकि जैसे रेगुलर डॉक्यूमेंट्स आते हैं वो भी तो PDF होते हैं। तो ये जो मैं बताने वाला हूँ ये PDF पे लागू होती है ये बात, इसीलिए मैंने ये आपको बता दिया। तो ये आप अगर जैसे आपका हो गया है, आपका PDF डॉक्यूमेंट्स रेडी है, तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि आप कैसे इसमें, एक सेकेंड बस, ये आपका पहले जो है ये एक डॉक्यूमेंट मैंने दिखाया है, फिर मैं दिखाऊंगा कि कैसे आप एक इमेज को कैसे प्रिंट कर सकते हो। तो एक टारगेटेड वे में, अब अगर आप इसको, अगर ये ट्रिक आपको पता नहीं हो, आप तो डायरेक्ट इसको प्रिंट दबा दे देंगे। इसमें भी जैसे मोस्ट जो लोग करते हैं, सारे लोग, तो ये आपका डॉक्यूमेंट है, इसको आपने प्रिंट कर दिया, ठीक है। तो एक सेकेंड, तो बस डॉक्यूमेंट मिल गया, उसको प्रिंट कर दो, Ctrl+P प्रिंट, ये मिल गया, प्रिंट कर दो। इसमें नुकसान क्या है आपको पहले जानना पड़ेगा। मैंने पिछले वीडियो में जैसे डिस्कस किया था आपका, जैसे ब्लैक इंक काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो जा रहा है इसमें, सारे जैसे इमेजेस हमें मिलते हैं नेचुरली उसमें ब्लैक बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम। और इसमें देखिए ये डॉक्यूमेंट है, इसमें ब्लैक है, ये है इसमें पूरा फुल पेज ब्लैक है। तो आप इसको कैसे मतलब रिड्यूस कर सकते हैं, एक दूसरा कलर जो आपका यूज़ नहीं हो रहा है, जैसे येलो कलर बिल्कुल यूज़ ही नहीं हो रहा है, उसको कैसे आप टारगेट कर सकते हैं। इसकी जगह पे आपका ब्लू कलर है, आपका रेड कलर है, उसको कैसे आप टारगेट कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं इस ब्लैक को वो करने के लिए। तो अभी हम देखते हैं कि ये जैसे है, ये PDF एक्सचेंज व्यूअर है जो टूल है, और अगर आप एक्रोबैट रीडर DC वो यूज़ कर रहे थे तो मैं आपको इनक्रेज करता हूँ कि आप इसको ट्राई आउट कीजिए। ये PDF एक्सचेंज व्यूअर है ट्रैकर सॉफ्टवेयर का। और जैसे यहाँ पे मैंने अभी एक रेक्टेंगल सिलेक्ट किया हुआ है, और रेक्टेंगल को मैं यहाँ पे ड्रॉ कर दूँगा,
ठीक है। नॉर्मली आपका जैसे होता है नॉर्मल, तो ये ब्लू कलर का यहाँ पे मैं फिल सेलेक्ट कर लूँगा। डिफ़ॉल्ट फिल नहीं होता है बिल्कुल, ये इसका डिफ़ॉल्ट है, ठीक है। आप ड्रॉ करते हैं, उसके बाद आप यहाँ पे जाएंगे, कलर सिलेक्ट करेंगे, कोई भी कलर, ब्लू कलर सिलेक्ट कर दिया। तो ये तो नॉर्मल है, आ गया, इसका तो कोई यूज़ नहीं है आपका। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो है आपका कलर जो ब्लेंड मोड है, ब्लेंड मोड में सारा कमाल है। तो मैं आपको यहाँ पे इसको स्क्रीन को थोड़ा सा शिफ्ट कर देता हूँ। ये आप देखिए कितने सारे ब्लेंड मोड्स हैं यहाँ पे, फिर भी नहीं दिख रहा है। तो ये जैसे जो ब्लेंड मोड्स हैं यहाँ पे, जैसे मल्टीप्लाई है, लाइटन है, हार्ड लाइट है, डिफरेंस, एक्सक्लूजन, ये सब आपको यूज़ करके आप कलर को ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जैसे डिफरेंस अगर यूज़ करता हूँ तो देखिए आप कैसा कलर आ रहा है इसमें। लेकिन ये हमारा यूज़फुल नहीं है, क्योंकि प्रीवियसली जो वाइट था वो येलो अभी आ रहा है, इसमें एक्स्ट्रा कलर यूसेज हो जा रहा है, ठीक है। टेक्स्ट तो ब्लू है ही, लेकिन ये ऐसे हो जा रहा है। तो इसको जो है हम कर सकते हैं, लाइटन यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए आप, ये कैसे लाइटन फिल्टर मैंने जो ब्लेंड मोड यूज़ किया, ये ब्लू आ जा रहा है। तो आप देख ही सकते हैं इसको। अगर आप ऐसे ब्लैक को, मतलब मैं जब बुक प्रिंट करता था, मैं ब्लाइंडली इस चीज़ को ब्लू करके ही प्रिंट कर देता था, मतलब, और देखता नहीं था कि मेरे पास कलर क्या है क्या नहीं है, क्योंकि मुझे ब्लैक को प्रिजर्व करके रखना था। तो ये क्या होता है कि ब्लू हो जाने से आपका सियान से भी ज़्यादा, मतलब सियान भी, जो सियान कलर है, सियान ट्यूब में भी कलर फ्लो करने लगता है, वो ब्लैक के साथ मिलके आपको नेवी का कलर जो होता है उसमें प्रिंट होता है। और ऐसा नहीं कि बस ब्लैक, तो क्योंकि मल्टीपल कलर्स आपको यूज़ होना ज़रूरी भी है, ये बस ऐसा नहीं है कि आपको इकोनॉमिक है, वो क्या है कि आपको तो सारे कलर्स को फंक्शनल रखने के लिए वो चाहिए। ये मैंने डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में, तो इसीलिए ये बहुत ही एसेंशियल हो जाता है, तो ऐसे प्रिंट करना। तो ये जो हो गया आपका, इसको फिर आप बड़ा कर सकते हैं, इसको फिर कॉपी पेस्ट कर सकते हैं दूसरे पेजेस में, और ऐसे करके आप, जैसे अभी आपको एक ब्लू कलर का मिल गया, अगर आपको आपको आप देख रहे हैं कि मुझे येलो कलर में प्रिंट करना है, मुझे ब्लू में नहीं करना है, तो आप अकॉर्डिंगली यूज़ कर सकते हैं। फिर कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं मोर कलर्स में, फिर उसका डार्कनेस बढ़ा सकते हैं आप, अगर पढ़ने में आपको दिक्कत हो रही है तो। ऐसे करके आप ये देखिए कैसे नाइस कलर आ गया, ये ब्लू का रिप्लेसमेंट हो गया। तो इसको आप बड़ा कर सकते हैं, इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं पूरे डॉक्यूमेंट में, और पूरा आपका प्रिंट कर सकते हैं। तो कैसे मैंने यहाँ पे एक कलर को टारगेट किया, बिल्कुल आप देख सकते हैं, ये डॉक्यूमेंट के लिए ये वैलिड है, ठीक है। और सेम चीज़ अभी हम कॉन्सेप्ट को देखेंगे यहाँ पे। अगर इसको आप ऐसे ही प्रिंट कर देंगे तो आपका बहुत, मतलब, नुकसान सा हो जाएगा, मतलब। तो ऑलरेडी तो ब्लैक इतना कम होता है, और इसको भी हम उसको सेम प्रिंसिपल में यहाँ पे एक ड्रॉ करते हैं, ठीक है। और ये मैंने पिछले बार इसमें किया था, इसलिए आपको यहाँ पता चल जा रहा है। यहाँ पे डिफरेंस लगा के यहाँ पे ब्लू कलर है, तो ये देखिए आप इसमें कैसे, ये इसको मैं अगर एक्सटेंड कर लूँगा पूरे डॉक्यूमेंट में, तो मुझे ब्लैक की जगह ब्लू कलर का प्रिंट आ जाएगा। तो ये मेरा बहुत सारा ब्लैक कलर बचेगा इसमें, और स्कैन का यूज़ भी हो जाएगा। ये है, और यहाँ पे आप दूसरे कलर्स भी ट्राई कर सकते हैं, आप येलो कलर ट्राई कर सकते हैं, ये भी काफ़ी अच्छा दिख रहा है। देखिए इसमें ग्रीन आ रहा है, इसमें येलो आ रहा है, और पिंक आ रहा है। ये मतलब आपका ब्लू कलर को भी बचा लेगा, और ब्लैक को भी बहुत ही कंटेंट में बचा लेगा। तो इस तरह के आप कलर मॉडिफाई करके अपने प्रिंट्स को निकाल सकते हैं और मैनिपुलेट कर सकते हैं, जब आपको बहुत नेसेसरी नहीं है कि एग्जैक्ट कलर रिप्रोडक्शन बहुत ज़रूरी है। वैसे केसेस में ये ट्रिक डेफिनेटली एप्लीकेबल है, जैसे आप रीड कर रहे हैं, जैसे जहाँ पे आपको कलर रिप्रोडक्शन उतना, कलर फिडिलिटी इंपॉर्टेंट है ही नहीं, ठीक है। मतलब वेरिएशन इज़ इम्पॉर्टेंट बट एग्जैक्ट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। ओके, सो ये था, ये ट्रिक मैंने देखा नहीं है किसी को डिस्कस करते हुए। तो आप अगर इससे आपको फ़ायदा होता है तो ये डेफिनेटली आप शेयर कीजिए अपने प्रियजनों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने कलीग्स के साथ, जिसको भी, जो भी प्रिंट करते हैं, जो भी इससे बेनिफिट ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये था मेरा ये वाला वीडियो, और इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और थैंक यू फॉर व्यूइंग। धन्यवाद।